So guys, next option for me is like company registration, and the most like I can say जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, okay, that is our proprietorship. कितने लोगों का proprietorship कंपनी है? कितने लोगों का है? Say yes, hand raise करिए. कितने लोगों का proprietorship कंपनी है? बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में proprietorship प्याली उससे. Okay, yeah, Harshad is also having yeah, okay, Vijay is having. Okay, so and this is private proprietorship company, right? So guys, it's one of the most common form. Yeah, okay, Tishan is also having. Okay, it is one of the most common form. Okay, export may whatever it is, guys, it is one of the most common form of business in India. If you go to tier 2 tier 3 city, guys, वहां पे आपको यही मिलेंगे. आपको हार्डली कोई कंपनी मिलेगा जो प्राइवेट लिमिटेड होगा या थोड़ा सा अलग होगा, राइट? हार्डली मिलेगा. अदरवाइज मोस्ट द कंपनीज यू विल गेट सब प्रोप्राइटरशिप कंपनी मिलता है. ओके, so and when single person runs a business, then such kind of business is called as proprietary. Let's say you are a single person, then you are running such a business, and then it's a proprietary business. Simple. Okay, so your personal PAN card will be your company's PAN card. Okay, जो कंपनी का आपका पर्सनल पैन कार्ड है, that will be your company's PAN card, guys. Okay, and you can start or operate with minimum regulatory compliance. ये सबसे ज्यादा क्यों चलता है? इसका रीजन यही है, कम से कम रेगुलेटरी कंप्लायंस है. Because obviously if you have taken GST, so obviously you need to file every month or every quarter. So there is a least compliance for that. कोई आपसे I think 1000 रुपए के आसपास लेता है मंथली. ओके, कुछ उससे कम भी लेते हैं. हाँ हर्षद जी, आपके वहां कितना लेते हैं? So it's around 3000. 3000 for year, month or year? Per month. Per month? Yeah. For proprietorship company? Yeah. Why is it is very high? Or like I think your transaction will be high. No, they are taking. They are looking after all the transactions and on a monthly basis. They are looking after the entire accounts also. I mean, whatever it is, it won't make much difference. 3000 is very high. Okay, so you can, yeah, sorry. No, it's okay. It's okay. Yeah. So you can start and operate business with minimum regulatory compliance. Okay. And what are the various registration? Okay, so registration is like MSME registration, and you can go for the GST. So two registration, if you go with the proprietorship company, then two registrations are okay. Okay, don't go with shop and stable. Don't उसके साथ जाने का कोई जरूरत नहीं है. MSME registration, why? Because like government of India से कुछ ना कुछ आता रहता है. Okay, and that comes under MSME. Okay, so if you like, it's like small and medium enterprises. So if you take MSME registration, तो कोई benefit होगा, तो definitely you can get that benefit. And guys, second option for me is just take that. Okay, GST registration. अगर मैं दोनों का कॉस्ट बात करूं, मुझे नहीं लगता 2-3 हजार से ज्यादा आएगा. ओके, इससे ज्यादा नहीं आएगा, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो जीएसटी खाली जीएसटी कराते हो तो आई थिंक 1,500-2 हजार में हो जाना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोप्राइटरशिप कंपनी. ओके, so and MSME guys, you can do on your own. It's so simple. Within 15-20 minutes you can do on your own. It's so simple. MSME registration you can get on your own. But if you say भैया CHA ही ले ले, तो आई थिंक आपका 2-2.5 हजार में आपका सब काम कर देगा. ओके, तो ये दो रजिस्ट्रेशन इसमें चाहिए. जीएसटी इज मस्ट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड दीज आर द वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. ओके, दीज आर द वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ओवर हियर. ओके, and you can say like PAN card is required, like ID proof is required, and obviously address proof. If you are starting your company from any rented premises, so you need to have NOC. Okay, you need to have NOC from your, कहाँ से NOC लेना चाहिए आपको? From your landlord. Okay, from your landlord NOC will be required over here. And second option for me is if that property belongs to me. Okay, if that property belongs to me, so what happens at that time, guys? Or sorry, if that property belongs to your parents or grandparents, so at that time, guys, okay, at that time it's very important to have their NOC also. Yeah, if that property belongs to you, तो obviously आप कोई भी एक document दिखा सकते हो, then it's not a big task. And your photo is required, so आपका एक काम होगा. Documents, these are the normal document required. What is the advantage? Easily you can start, right? Easily you can start. It's so simple,
and flexible operations are there. Okay, and can select any business name. As I told you, you can choose any business name. You can choose any business name. Okay, if you say, sir, Amit Export, Sunil Export, Harshad Export, any name you can choose. Harshad Global, Amit Global, any name you can choose. Whether it is generic or not, it doesn't make any difference. Okay, and undivided profit is there. Okay, undivided profit. So what do you mean by undivided profit? And that is where you are the owner and you are the single person जो handle कर रहे हो company को, तो जितना profit होगा सब आपका. That is called undivided profit. Okay, and taxation में initially there are some benefit. Okay, initially there are some benefit in taxation, but बाद में इसका नुकसान होता है. Initial benefit क्या होता है? Let's say initially you are going to earn how much you are going to earn? Let's say 5 lakh. Okay, कितना लगता है यहाँ पे इंडिया में टैक्स कितने पे उस पे लगता है अमाउंट पे? कैन यू टेल मी कितने पे टैक्स लगता है इनकम पे? Above 5 lakhs. हैं? Above 5 lakhs. या अबव 5 लाख. ठीक है ना? ओके, सो अबव 5 लाख होता है गाइस. सो अगर मैं अबव 5 लाख की बात करूं तो टिल 5 लाख, if you are like, if your profit is, I'm talking about profit, not your revenue. Okay, I'm talking about if your profit is 5 lakh in proprietorship company, then कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं. Okay, that is the benefit in taxation, but इसका बाद में नुकसान. So these are the various advantages. सबसे बड़ा है easy to start, little compliance are there, but the biggest disadvantage, okay, the biggest disadvantage for this company is, and that is unlimited liability to proprietor. So can you tell me what do you mean by unlimited liability? कोई बताएगा unlimited liability क्या होता है? Anything goes wrong, even the personal, properties, etc., could be taken. Yes, guys. Yes. So this is very risky. Okay, this is very risky over here. Okay, if you don't get, let's say you are going, you need to pay some like okay, you need to pay some what I say loan debt to any bank or some other person, and you are not able to pay that. So then guys, they will recover it from your personal property also, right? They will recover it from your personal property also. So this is the biggest disadvantage, my dear friend. Okay, this is the biggest disadvantage that can be recovered from your personal property. आप बोलोगे सर मेरा घर है 1 करोड़ का, मेरे बैंक में है 50 लाख, 1 लाख 1 करोड़. तो गाइस वहां से भी वो रिकवरी हो सकती है, and that's why I have mentioned it in that unlimited liability to proprietor. Okay, बड़ा डेंजरस है. डेंजरस है नहीं है? Yeah, it's extremely dangerous. Even कोई tax liability बन गया है other than loan, even then they can recover it from your property. या कुछ भी होगा. Okay, कुछ भी होगा, because your PAN card is same. Your company's PAN card और your PAN card एक ही है भैया. जो भी होगा वो सब आपका पर्सनल है. ओके, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. इसका और कोई बड़ा मेजर डिसएडवांटेज नहीं है प्रोप्राइटरशिप का, बट इससे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज कोई नहीं लगता कंपनी में. पर्सनल, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, राइट? इससे मुझे नहीं लगता इससे बड़ा भी कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद योर पर्सनल प्रॉपर्टी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक लिमिटेड स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल, बहुत कम स्कोप होता है कैपिटल को रेज करने का. सो दैट इज लाइक आई कैन से फंडिंग जिसको बोलते हैं. एंड हायर टैक्स इंसिडेंस. आप पहले तो बोल रहे थे टैक्स में बड़ा फायदा होता है, बट इफ आपका स्लैब बढ़ गया भैया, आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक योर प्रॉफिट, एंड आपका प्रॉफिट 20 लाख हो गया, देन टैक्स लगेगा 30%, 30% डायरेक्ट. ओके, सो दैट आई कैन से डिसएडवांटेज इज ऑल्सो देयर. एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर. भैया इफ लाइक प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है तो देन गाइस ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंटिन्यू नहीं करेगा. ओके, या हाँ कोई आगे है, बच्चे हैं एंड ऑल, सो at that time they need to like convert or transfer all the assets and like responsibilities, whatever it is, to another company. Yeah, company name can be same, but at that time they need to give their own PAN card, and then all the like assets liability will be transferred from their PAN card to like your son, और जो भी जिसका भी आपने नाम दिया है उनको ट्रांसफर होगा. बट ये कंपनी भी बंद हो जाएगी, ये नहीं चल पाएगी आगे
अगर प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है। ओके, then comes कि भैया if you say sir I am not alone and I want to start this with my friend, my relative and all, so you can go with partnership firm. Okay, you can go with partnership firm where minimum 2 partners are required and maximum you can go 20, not more than that, 2 से 20. Okay, उससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में. एंड एडवांटेज की बात करें तो वही है, इजीली यू कैन मेक इट लाइक लार्जर रिसोर्सेज. व्हाट डू यू मीन बाय लार्जर रिसोर्सेज? कि भैया इन प्रोप्राइटरशिप कंपनी लेट्स से यू हैव 5 लाख रुपीस. ओके, आपके पास 5 लाख रुपया है. ओके, बट यू आर अ लोन पर्सन. बट यहाँ पे लेट्स से 2 लोग मिल गए, दोनों के पास 5-5 लाख है. ठीक है, तो अब कितना हो गया? लार्जर रिसोर्सेज. अब 10 लाख है इस कंपनी के पास. ओके, तो लार्जर रिसोर्सेज हो सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस. ठीक है, हाँ भैया, they can say okay, don't worry, I will take care of operations, you take care of sales, you take care of like marketing and all. So this is how you can do and you can manage in a better way and sharing of risk. In proprietorship company you are alone guys, risk भी आपका ही है. Okay, कहीं चोट लगी तो वो भी आपकी है सारी. But over here you are 2 or more than 2 person, so at least कुछ भी होता है तो risk sharing can be done. Okay, आपस में you can share the risk. तो इसका फायदा है. अगेन डिसएडवांटेज की बात करें, इंस्टेबिलिटी गाइस, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती. ओके, किसी का डेथ हो गया पार्टनर का या किसी ने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी तो ये कंपनी बंद हो सकती है. एंड अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी टू द प्रोप्राइटर. कि भैया जो ओनर है कंपनी का, उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पे. ओके, एंड लैक ऑफ हार्मनी. मैंने देखा भैया लड़ाइयां भी हो जाती हैं जल्दी. राइट, लिमिटेड कैपिटल बिकॉज मैक्सिमम 20 आर अलाउड, नॉट मोर देन दैट. 20 लोग आए, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे. ओके, लीगल स्टेटस नहीं है. इन द सेम वे गाइस, प्रोप्राइटरशिप इज आल्सो नॉट हैविंग ए लीगल स्टेटस. इफ आई से सर मेरा कंपनी का नाम अमित ग्लोबल है, इसका भी नाम आप कुछ भी रख लो, अमित ग्लोबल, हर्षद ग्लोबल, जो भी है, ठीक है, बट दैट विल नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस. उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा. ओके, एंड इट्स नॉट इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप. ओके, अगर मुझे एग्जिट करना है, वांट टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी, सो इट्स डिफिकल्ट टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, लेट्स से हम 3 पार्टनर हैं एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ द कंपनी, सो आई नीड टू गेट परमिशन फ्रॉम बोथ द पार्टनर, जो बाकी 2 पार्टनर, अदरवाइज आई कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें मुश्किल होता है. एंड सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा अलग से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. वही पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं. कहीं भी चले जाओ, और कोई अलग से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता. बट गाइस देन what actually government of India came with, they came up with limited liability partnership. Okay, limited liability partnership. So what do you mean by a limited liability partnership? Because I told you in partnership firm it's like very difficult because your liability is not limited, so unlimited liability is there. And if sometime people say कि if you go with private limited company, so compliance बढ़ जाएगा. ठीक है, तो what government of India did, दोनों को क्लब किया. Okay, they club private limited and partnership together, and जो तीसरा प्रोडक्ट बन के आया, that is your LLP. Okay, that is your LLP and इसको बोलते हैं limited liability partnership. Okay, is a combination of both. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. एंड ये प्राइवेट लिमिटेड से थोड़ा सा नीचे है, पार्टनरशिप से ऊपर है, उन दोनों के बीच में. इसका कंप्लायंस थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं. बिकॉज यहाँ पे लिमिटेशन जो है, हमारा जो लायबिलिटी है, दैट इज अगेन लिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड. ओके हर्षद, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इसका मतलब. ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे द लायबिलिटी जो है, ओके, अगेन लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू मी. एंड अगर इफ आई टॉक अबाउट कंप्लायंस पार्ट, वो दैट इज लाइक थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, बट थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. बट स्टिल आई कैन टेल यू, your CA will always suggest you, if you are like comparing between private limited company और LLP, तो CA बोलता रहे सर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आप प्राइवेट लिमिटेड ही खोल लो ना. ठीक है, उसका हमेशा रिप्लाई जाता रही होता है. ठीक है, सो लायबिलिटी यहाँ पे एक बड़ा फर्क है. द पार्टनर ऑफ LLP इज हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी. ओके, मतलब कि
कंपनी में कुछ भी हो गया, then no one can touch your personal assets. ठीक है, कंपनी में कुछ भी हो गया, कंपनी भैया बैंकरप्ट हो गया, चला गया, डूब गया, जो भी हुआ, बट आपके अकाउंट में 2-4 करोड़ रखे हैं, बड़ा सा बंगला है, नो वन कैन टच दैट, कोई इसको टच नहीं कर पाएगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ LLP. ओके, लायबिलिटी लिमिटेड है भैया, अनलिमिटेड नहीं है. ओके, एंड परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि as I told you in private proprietorship company या partnership company में अगर पार्टनर का डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो ये कंपनी बंद हो जाएगा. बट इन दिस केस गाइस, ये कंपनी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, परपेचुअल चलता रहेगा, ये कुछ बंद नहीं होता. ओके, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप. एज आई टोल्ड यू, वहां पे मुश्किल था ट्रांसफर करना, बट हियर गाइस इजीली यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ कंपनी. ओके, एंड नो कंपल्सरी ऑडिट. अगर आपका if your turnover is below 40 lakh, okay, in a year, तो compulsory audit required नहीं है. And then there is one more thing, इसमें कितने लोग ऐड हो सकते हैं बिजनेस में, तो guys there is no limitation for that. आप अपने भाई, दोस्त, प्यार बंधु, अपने पूरे गांव को, मोहल्ले को, जितने लोगों को इकट्ठा करना चाहो, कंपनी में इकट्ठा कर सकते हो. there is no limitation. okay, there is no limitation. गवर्नमेंट ने कोई लिमिटेशन इसमें नहीं. दिस इज एडवांटेज. ओके, ये नॉर्मल वही डॉक्यूमेंट होते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट भैया इसका डिसएडवांटेज क्या है, एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इज कंप्लायंस कॉस्ट. ठीक है, कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. कोई है हमारे साथ? ओके, विपिन जी, हाउ मच यू नीड टू पे फॉर द कंप्लायंस? डिड यू डिस्कस विद योर CA? Yeah, it is around 7,000 to 8,000. They said for company formation. Company formation. Yes, you are right. Yeah, right. Price is okay. And apart from that, did you ask about like monthly compliance? Monthly complaints, no. They said yearly there is a like AMC, there is a annual maintenance or we can say the support cost. How much is that? Also comes like around 5,000 to 6,000. They said, I believe. Okay, but no, actually you are going to like get GST also, and Yeah. then you will file GST monthly, quarterly, whatever it is. Again, that is a compliance cost. So how much they will charge from you? See, that part I am not checking with them because my wife also is a CA, so Okay. I'm not checking with them that part so far. Okay. So they will take care about the GST registration and all. आपका तो घर में ही CA है, आपको क्या टेंशन है? Yeah. Right. Yeah. So I don't think you will have any problem because you are CA in your house. Yeah, but still there is a challenge. Like she wanted to be partner, but since she is a partner, then she cannot do that. Do the auditing part. Yeah, then she cannot do that. Yeah. So that's what we are checking some solutions for that. But as you said, like a complaints course, I didn't discuss. Maybe I need to take care about that part also. I need to check. Yeah, because you have only CA, sir. Why will you ask? Nah. Right. So don't worry about that. Then because CA, but yeah, apart from that, it is for others. Okay. If you are going to deal such situation, so please discuss with CA that how much will be the compliance cost. Okay. We talk about the yearly, what will be the cost yearly, and if they discuss monthly, yearly, whatever it is, so that you can calculate how much you need to pay. Okay. Proprietorship में बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, but हाँ, यहाँ पे there you need to pay some amount, so you need to discuss with your CA. Okay. And then comes to the private limited company. Okay, private limited company, guys, it's the same way. The LLP is there in the same way, guys. It is also privately held business entity, and obviously it's like private stakeholders. And maximum you can go with 200, minimum 2, and 2 to 200. 2 से 200 लोग इसमें आप ऐड कर सकते हो. Okay, so this is the like membership over here, right? As I said, in LLP there is no limit over there. In partnership firm it's like maximum 20, and in proprietorship it's like only 1 person, but यहाँ पे the limit is there 200. Okay, maximum you can go with 200, not more than that. And again it's a limited liability structure. Okay, again it's a limited liability structure, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. वही
because no one can touch your personal assets. ये सबसे बड़ा advantage होता है as a businessman. Okay, as a businessman guys, this ये सबसे बड़ा advantage है. Okay, so that no one can touch our personal assets. And I told you it's a separate legal entity. As a company, it's a totally different, or as a person, you are totally different. ठीक है? As a person, you are different, or as a person, as a company, it is totally different. तो इसलिए कंपनी में कुछ होगा, आप कुछ कर रहे हो, तो दोनों का आपस में लेना देना नहीं होगा. Okay? Amit sir, just a query. Regarding this private limited company also, if we go for any loan, the initial stage, the bank will ask us a collateral for either the personal stuffs, right? Either home or land. So that will be a challenge in future, or what do you think? In future? Yeah. Yeah, actually, yeah, you need to have, because there were scams in earlier days, past days. There were scams in PNB and some other bank, right? Exactly. Yeah, because of that now, like it's mandatory, you need to have like some collateral over there. But if sometime government of India also giving you some schemes and all, so at that time you can avail that, and वहाँ पे you no need to pay any collateral over there. But that will vary actually. Okay, that will vary. There are some government schemes which you can avail over there without collateral also. But if you say go to bank directly, भैया give me loan, तो बोलेगा भैया कुछ लेके आओ. Exactly. Yeah, that is a scenario. Okay, thank you. Then minimum paid up capital is required. Okay, if you go with the private limited company. Okay, private limited company. तो एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, हर्षद जी जो आप पूछ रहे थे, उसके एक ये भी रीजन है कि minimum paid up capital is required in private limited company, and that is minimum 1 lakh rupees. Okay, minimum 1 lakh rupees. And in LLP company there is no such requirement. Okay, there is no such requirement over there. And but it's nothing guys. Okay, as of now guys, government of India has also removed that, but still if you are going with private limited company, just at least you have like 50,000, 1 lakh rupees of minimum paid up capital. It's nothing. It's nothing. You just need to maintain, or you just need to show in your account 1 lakh का transaction. That's it. जब आप कंपनी बनाते हो ना, तो बैंक में आपको 1 लाख का ट्रांजेक्शन दिखाना है, और वो 1 लाख आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, आप कंपनी के एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू. ओके, सो दैट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल that is required in private limited company. But government has said, okay, no problem, you can go with the minimum paid up capital also. But still I will suggest you, if you are going with private limited company, at least have some, at least 50,000 rupees का तो minimum paid up capital होना चाहिए. Okay, so then comes to guys another company formation, that is called one person company. क्या होता है, sometime भैया I'm not comfortable, if someone is not comfortable with proprietorship company. Okay, he wanted to start alone, but he is not comfortable with proprietorship company because of that unlimited liability. So if you want to go with कि भाई नहीं सर मैं अकेला स्टार्ट करूंगा, but still मैं बहुत ज्यादा compliance तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, then there is one option for you, that is called one person company. Okay, so you can go with one person company. Okay, in this guys one person company, okay, you can say individual can form a company for any lawful purpose. आप अकेले हो, आप बना सकते हो. Okay, and but yeah, you need to understand one thing कि भैया नॉमिनी जरूर होना चाहिए. Okay, कोई ना कोई नॉमिनी आप बनाइए. You should have some nominee over there. Okay, because in case of death of your owner of the company, तो वो नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है whether he want to go with that company or he want to close that company. Okay, and maximum you can have like 15 directors over there. तो गाइस इसमें भी क्या होता है, one person company, this company are considered as separate legal entity. It's not like proprietorship company, because proprietorship company is not a separate legal entity. Even you go with the partnership firm, that is also not a separate legal entity. But if you go with LLP, if you go with private limited company, if you go with one person company, so these are separate legal entity. As a person I am totally different, as a company these are totally different. Okay, the owner of the company is not liable to repay the debt. कि भैया ओनर और कंपनी में कुछ हो गया, कंपनी में डूब गई, लॉस हो गया, तो ओनर को पे करने का जरूरत नहीं होता. ओके, एंड ओपीसी कैन रेज इक्विटी फंडिंग, मतलब कि आप इक्विटी फंडिंग वगैरह रेज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज हैविंग
better credibility in comparison to proprietorship or partnership. Okay, and yahan pe guys, earlier there was a rule. Yeah, any question? Yes, sir. Tell me, sir. Sir, if we can add a number of people into an OPC, then how does it remain an OPC? They are directors, sir, not the owner. Okay, okay. Okay, so one person company will be allowed to convert into any type of company. Earlier, what happened? कि भैया अगर आज आपने एक 1% कंपनी बना लिया तो गवर्नमेंट ये बोलती थी, ओके, गवर्नमेंट आपको ये बोलती थी कि भैया आप फॉर नेक्स्ट 3 years यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस कंपनी टू अनदर फॉर्म, या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 3 साल तक उसको ऐसे रखना पड़ेगा. बट नाउ गवर्नमेंट हैज चेंज्ड ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ यू कैन कन्वर्ट, ओके, दैट 1% कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनी टाइम. आपको लगता है भैया मेरे को 1% जब नहीं काम करना, आपने 1 साल काम किया, नाउ यू आर फीलिंग नहीं सर बहुत अच्छा चल रहा है, आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट टू प्राइवेट लिमिटेड, गो अहेड विद दैट. अर्लियर वहां पे नहीं कर सकते थे, 3 साल तो नहीं कर सकते थे. और कर कब कर सकते थे? देयर वाज वन सिचुएशन कि भैया इफ यूर लाइक टर्नओवर इज, ओके, इफ योर टर्नओवर इज अर्लियर इज लाइक 2 crore रुपीस, ओके, तो आप 2 से अगर वो टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ हो गया, तो guys in that situation you need to forcefully convert 1% company to private limited company. Well, let's say I'm running 1% company and पहले ऐसा होता था 1 साल पहले, and मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से 2.25 करोड़ हो गया या 2.5 करोड़ हो गया, 2.5 crore annual. तो guys forcefully I need to convert that 1% company to private limited. ये forcefully लो था, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दैट लिमिट. अब वो 2 करोड़ से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 20 करोड़ कर दिया. बोलो भैया 20 करोड़ तो टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है. एंड आई थिंक इट्स फॉर स्टार्टअप कंपनी इट्स वेरी गुड अमाउंट. ओके, एक सही लेवल है ये. एंड यहाँ पे इफ यू आर एनआरआई ऑल्सो स्टिल यू कैन लाइक हैव दिस कंपनी गाइस. ओके, एंड इसमें आपको जो इंडिया में अगर हो यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको अर्लियर 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए था. अभी गवर्नमेंट ने उसको भी लिमिट को कम कर दिया. अगर आप 120 डेज में इंडिया में रहते हो still you can start this company. Okay, so now my suggestion to all of you, my suggestion, because obviously you are having question in your mind कि मैं कहाँ से start करूँ. Okay, obviously, so my suggestion to all of you, if you are starting from zero, okay, if you are starting from zero, you don't have any knowledge about business, okay, आपको कुछ नहीं आता पता, कुछ नहीं आता जाता about business. So my preference to you, my suggestion to you, go with the proprietorship company. Okay, but ऐसा नहीं है कि भैया हमेशा उसके साथ काम करना. Work with that company for 2 years, 1 year, जो भी आपको लगे, 3 years, जो भी आपको लगे. And once you feel everything is okay, then you need to convert that company to LLP में कर लीजिए या फिर आप इसको private company में कर लीजिए. Because if you talk about the long term game, तो long term game LLP या private limited में ही है. प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं. ओके, या एंड स्टिल एक ऑप्शन और है आपके पास, दैट इज यू कैन स्टार्ट ओपीसी ऑल्सो. ठीक है, ओपीसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है भैया मेरे को बिजनेस का सब नॉलेज है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैं तो कर रहा हूँ ऑलरेडी एंड फिर ऑलरेडी डूइंग सब बिजनेस, सो देन इफ यू गो विद एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन वन सजेशन टू यू, if you're starting any proprietorship company and down the line 2 year 3 year you say sir now I want to convert that proprietorship company to private limited or some other form, so at that time you can convert assets, liability, you can convert, but the main problem is that is you will not get that name. Okay, the way sir is telling कि वो नाम नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आता है. So at that time you may not get that name. So इसके लिए what you can do, you can have any trademark registration initial. Okay, कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेट करवा सकते हो आप. आई थिंक द कॉस्ट इज अराउंड 7,000 रुपीज, 7-8,000 रुपीज. सो यू कैन हैव ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आफ्टर 2 or 3 years इफ यू वांट टू लाइक से बोलोगे मुझे जाना है, ओके, मुझे कन्वर्ट करना है सम अदर फॉर्म में, तो आपके लिए इजी होगा. इफ यू डोंट गेट दैट नेम ऑल्सो, स्टिल यू हैव ए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड विद यू एंड यू कैन यूज दैट ट्रेडमार्क. Okay, you can use that trademark, so that is always beneficial for you.
तो ट्रेडमार्क जरूर लीजिए अगर आप प्रोप्राइटरशिप से जा रहे हो। इफ यू फील कि यस माय प्रोप्राइटरशिप इज हैविंग अ यूनिक नेम, तो उसको आप रिजर्व कर लीजिए अपने लिए। तो फ्यूचर में जब उसको कन्वर्ट करोगे टू प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी, देन देयर आर मोर पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट दैट नेम, एंड इफ स्टिल यू डोंट गेट दैट नेम, स्टिल यू कैन यूज द ट्रेडमार्क, अपने बिजनेस में यूज करिए, क्योंकि 3 साल से जो नाम बनाया है वो आप नाम कंटिन्यू कर पाओ। ओके।